नमस्कार। भारतीय पुनर्वास परिषद के नवशिखर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमित शर्मा। दोस्तों, आज बात होती है इंटीग्रेशन की, इंक्लूजन की। बच्चों को एक स्पेशल स्कूल का एक एनवायरनमेंट देने की बजाय हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो सजेस्ट करते हैं, क्योंकि बच्चे को फाइनली हमें इसी एटमॉस्फेयर में, इसी सोसाइटी में, इन्हीं लोगों के बीच में सेटअप करना होता है, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि ऐसे बच्चों को पहले से ही हम उन स्कूलों में शिक्षा दें, उन बच्चों के साथ में शिक्षा दें जिनके साथ में कल को इन्हें अपनी जिंदगी में एडजस्ट करना है। यानी वह वातावरण उन बच्चों को पहले से ही दिया जाए जिनके लिए बाद में हम उन्हें तैयार करने की योजना बना करके चलते हैं। इससे दो तरफा लाभ होता है। एक तो ऐसे बच्चे कल को उस सोसाइटी में एडजस्ट होने के लिए कहीं ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। इसका एक और इम्पैक्ट भी होता है, जो ये कि जो हमारे बच्चे इन बच्चों के साथ में पढ़ रहे हैं वे इनको अपने से बिल्कुल अलग देखने के बजाय अपने में ही किसी एक को समझते हैं। इन बच्चों की स्पेशल नीड्स के बारे में वे कहीं ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, और ये इस लिहाज से बहुत ज्यादा अच्छा होगा कि आने वाली सोसाइटी में हमारे स्पेशल जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए एक बेटर एटमॉस्फेयर तैयार किया जा सकेगा। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं और इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों इंटीग्रेटेड एजुकेशन या इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो हमारे ऐसे बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। आज हमने अपनी चर्चा के लिए विषय चुना है इंटीग्रेशन वर्सेस इंक्लूजन, और इस सब्जेक्ट पर अपनी एक्सपर्ट नॉलेज के साथ में आज हमारे साथ गेस्ट हैं मिस अंजू सक्सेना जी। आपका स्वागत है मैडम हमारे कार्यक्रम में। तो दोस्तों, अपने गेस्ट से हम बात की शुरुआत करें और इस बात को समझने की कोशिश करें कि इंटीग्रेशन क्या होता है, इंक्लूजन क्या होता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे एक्सपर्ट से इस टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहें तो आपका स्वागत है। आप हमसे पूरे प्रोग्राम के दौरान कभी भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस हम तक पहुंचा सकते हैं। नोट करिए हमारे नंबर्स जिन पर कि आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-11-2008। हमारा फोन नंबर 011-265-11611 और हमारा फैक्स नंबर है 011-265-11609। इसके अलावा अगर आप ईमेल में अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, आप अपने क्वेश्चंस हम तक ईमेल के थ्रू ही पहुंचा सकते हैं। नोट करिए हमारी ईमेल आईडी। हमारी ईमेल आईडी है rehabstd@ndc.vsnl.net.in। और हमारे कार्यक्रम से रिलेटेड किसी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। नोट करिए हमारी वेबसाइट www.rehabcouncil.nic.in। आइए अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। अंजू जी, आज हमारा जो टॉपिक है इंटीग्रेशन वर्सेस इंक्लूजन। एक कॉमन पर्सन के लिहाज से अगर हम ये समझना चाहें कि इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, हम तो पूरे प्रोग्राम में इस बात की चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन ये इंटीग्रेशन क्या होता है, इस चीज को अगर हम समझना चाहें तो आप क्या बताएंगे? जैसे कि इफ वी लुक एट आवर आरटी, हम अपने आरटी की पॉलिसी को भी देखते हैं। उसमें गवर्नमेंट ने बात करी है कंप्लीट इंक्लूजन की जी, कि इंक्लूड दीज चिल्ड्रन इन मेन स्ट्रीम स्कूल जी। और गवर्नमेंट ने उसमें कहा है कि स्कूल्स को अपने आप को तैयार करना है इन बच्चों को अकोमोडेट करने के लिए, इन बच्चों को साथ में पढ़ाने के लिए। लेकिन अगर जहां हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं, इफ यू लुक एट इंटीग्रेशन मीन्स वी आर प्रिपेयरिंग द चिल्ड्रन, वी हैव टू प्रिपेयर दीज चिल्ड्रन फॉर गोइंग टू दोज क्लासरूम्स। जैसे कि बहुत आपको एग्जांपल देती हूँ, देयर आर चिल्ड्रन हु आर इन क्लास 4, chronologically their age is 9 years and they are in class 4, but the academic levels, they are not able to follow the same curriculum को वो सेम तरीके से फॉलो नहीं कर पाते हैं और बच्चों की तरह। सो कॉल्ड जिन्हें हम मेन स्ट्रीम के बच्चे बोलते हैं, ये बच्चे उनकी तरह करिकुलम नहीं फॉलो कर पाते हैं, उनके लेवल का करिकुलम दे आर नॉट एबल टू फॉलो। सो फॉर दैट sometimes we have to take these children, I will say that prepare these children in a smaller setup, where the setup is in school only, the setup is there only with other classrooms, but we are preparing these children by taking them out, or we are preparing them
to go back to those particular classes, go back to those that setting, that classroom setting, that school setting. So we are so that is why the integration is where we are preparing the children for going back to the school setup, for going back to the classroom setup. जैसे कि अगर आप इस स्लाइड में भी देखेंगे, integrated education क्या है? integrated education, integration calls upon children with special needs to fit in the existing schools, the focus remaining on the children to mainstream them. When we are saying the focus remains on the children, here we are saying we are preparing the children, whether it is academic, social skills, other life skills, aerial activities of daily living skills, or any other skills. We are preparing those children to be moving back to the classroom setting. मैम यहाँ पर आपको एक मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा और एक चीज मैं पूछना चाहूंगा। यहाँ पर एक बात पर आप जोर दे रही हैं कि यहाँ पर हमने कहा कि प्रिपेयरिंग द चिल्ड्रन। यस। तो यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ द स्कूल का कोई पार्ट नहीं है। एक्चुअली जब हम बात कर रहे हैं, हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हम ये क्यों बोल रहे हैं कि हम बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं और बच्चों को क्लासरूम सेटिंग में जाने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? बिकॉज हमें बच्चों के साथ इंडिविजुअली और मे बी 1:4 के ग्रुप में हम काम करके उनको प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम ये नहीं बोल रहे कि क्लासरूम या स्कूल सेटिंग को उनके लिए प्रिपेयर होना है। यहाँ पे हम बच्चों पे ज्यादा फोकस करें। इट इज नॉट दैट कि हम स्कूल या क्लासरूम में बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे भी काम हो रहा है, लेकिन जहाँ तक बात है बच्चों को प्रिपेयर करने की ज्यादा फोकस उसके ऊपर रहेगा। जैसे कि अगर आप देखेंगे, इंटीग्रेशन ट्रेडिशनली रेफर्स टू द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन मेन स्ट्रीम सेटिंग्स ओनली। वी आर नॉट सेइंग दैट वी आर टेकिंग देम आउट ऑफ द स्कूल, वी आर सेइंग दैट इनसाइड द स्कूल ओनली, समटाइम्स इनसाइड द क्लासरूम ओनली, बट फॉर मेनी थिंग्स वी आर प्रिपेयरिंग देम. Why we are preparing them? Because we want them to be able to go back to the class, to go to the normal classroom setting, and focus somehow remains more on children, more on preparation of children, not on otherwise. Like we will discuss that also when we talk about inclusion. We will come on to that also. But here we are preparing children to be able to cope up with others in mainstream setting. एंड जैसे कि अब हम बात कर रहे हैं, अभी हम इंटीग्रेटेड की बात कर रहे हैं कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या होता है, बट हम क्यों सोच रहे हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन के बारे में, किस लिए सोच रहे हैं? कोई तो कारण होगा। देयर आर क्या प्रॉब्लम थी जो कि जैसे हमारे स्पेशल स्कूल्स ऐसे बच्चों के लिए पहले ही सेटअप किए जा चुके हैं, वहां पर हमारे ऐसे बच्चे एजुकेशन भी ले रहे हैं, बहुत ज्यादा वोकेशनल कोर्सेज भी हो रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या बेहतर समझा गया जो स्पेशल स्कूल जो चीज प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, जिनकी वजह से हमारे एक्सपर्ट्स ने, हमारे विद्वानों ने ये चीज ज्यादा बेहतर समझा कि ऐसे बच्चों को स्पेशल स्कूल में जाने की बजाय उनको इंटीग्रेशन में भेजा जाए। जैसे कि काफी सालों पहले स्पेशल स्कूल्स भी होते थे, स्पेशल स्कूल्स बहुत ज्यादा भी होते थे तादाद में, क्योंकि स्पेशल स्कूल्स में क्या होता था कि जो बच्चे जिनको हम हैंडीकैप बोलते हैं या हियरिंग इम्पेयर्ड बोलते हैं या विजुअली इम्पेयर्ड बोलते हैं, वो बच्चे उस समय मेन स्ट्रीम स्कूल में नहीं जा पा रहे थे, तो उनके लिए अलग से स्पेशल स्कूल चलाए जाते थे, जहाँ पे स्पेशल एजुकेटर्स होती थी, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते थे, स्पीच थेरेपिस्ट होते थे, जो कि अभी भी हैं। इट्स नॉट दैट कि आई एम नॉट डिनाइंग कि इट इज नॉट नाउ, इट इज स्टिल प्रेजेंट, बट earlier what we were doing, we were sending most of the children with special needs. Why I'm saying most of the children? Because most of the children, like except some children with polio who were going to mainstream schools, and some children with cerebral palsy, only locomotor difficulties, because of that they were also going to mainstream schools. But now what the government is talking about including more and more, integrating more and more children in the mainstream setting. So वहाँ पर special schools में, जैसे कि मैं इस स्लाइड पढ़ रही हूँ, problems in the special schools, the limitation of special schools and its facilities causes a lot of children with special needs have limited opportunity to get appropriate educational services. The function of special schools is not yet optimal. Why we are saying that the function of special schools is not optimal? Because in a special school, when you see only those few children, 20 children or 21 children, out of those 4 in pre-primary, 4 in primary, 4 in secondary, and 4 in senior secondary, and some are in vocational courses, children were only moving around with other children who also have difficulties. What are they learning? They have that limited, that limited sphere in which they can move. But they have never seen, then they will never get opportunity to see what is happening outside. They will never get
the opportunity to learn from others, from yes, and they are not being exposed in the society what is happening outside. Yes, and they will not, firstly they will not be exposed to it, secondly they will never get a chance to learn from so-called, we always call it normal milestones, normal social skills, or we say socio-emotional development. They will never get a chance to learn from others. And at the same time, special educators and other teachers and occupational therapists, speech therapists are only able to give them that limited exposure, you know, adapted curriculum only, functional curriculum only. But have they ever tried to adapt the mainstream curriculum also to their level? Have they ever tried to involve these children in various other activities of the school curriculum? School is not only that core curriculum of maths, English, Hindi, science. School is having so many other extra co-curricular activities like drama, art therapy, music and yoga, and many other, like assembly, participation in assemblies, prayers, and otherwise like having lunch together, having breaks together. Children learn a lot from each other. So if we talk only about a special school, children who are in special school, who are with special needs, they get very limited. They get that very limited exposure. They don't get that maximum, you know, whatever maximum we can give them. After all, they have to live in this life. They have to live with others, like you said earlier. So for that, we have to teach them. How will we teach? How will we learn? We always learn by observation, by observing others. So we have to give them a chance. Like, look at this special school scene. What is there? There are some CP chairs, there are some chairs, some limited number of teachers, very limited, you can say, if I look at physical infrastructure, a very small place. They are not getting exposure in outside, in park, in outside ground also. They don't have many swings also. So there are other needs also, gross motor needs, gross motor milestones achievement, fine motor milestones achievement, socio-emotional other needs, you know, other milestones achievement. So for that you need space also, you need more people, you need more other children also to work with, to play with. So again, if you look at this community problems, in the community there is a large number of children with special needs who have no opportunity to obtain educational services in regular schools as well as in special schools. So problem can arise in the community also. It's not only that special school problems or the community problem. Problem can be anywhere and everywhere. But how to cope up with it, or how to work on it, and how to find out the solution, that is what we have to look for now. हाँ, खास करके एक चीज जो यहाँ पर समझी जा रही थी कि अगर बच्चों को हम ऐसे एक स्पेशल एनवायरनमेंट पे हम प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, तो कल को वो उस सोसाइटी में न तो उस तरह से अच्छे ढंग से एस्टेब्लिश हो पाएंगे, या जब हम उनको इस स्पेशल स्कूल के एनवायरनमेंट से एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में जब भी हम उनको शिफ्ट करेंगे, तो उनके लिए एक सब कुछ नया नया, एकदम बिल्कुल अजीब सी चीज, डिफिकल्ट चीजें होंगी, कुछ नया एनवायरनमेंट, किस तरह से लोगों के रिएक्शन आएंगे, किस तरह से उनसे वो कोप अप करेंगे, किस तरह से अपनी भावनाओं को वहां पर एक्सप्रेस करना उनको आएगा। ये बहुत सारी ऐसी डिफिकल्टीज थी जो कि इस तरह के जो सेटिंग्स हैं वहां पर इस्टेब्लिश करती थी, और इसी को रिमूव करना हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मुख्य उद्देश्य रहा होगा, और इसीलिए उन्होंने बेटर समझा कि हमको इंटीग्रेशन की तरफ मूव करना चाहिए। यस, जैसे कि अगर हम कम्युनिटी में देखते हैं, कम्युनिटी में जैसे कि मैंने अभी ये पढ़ा है, there are many problems. Sometimes people don't know where to go. Sometimes children also don't get that, you know, they don't get admission in special schools also. They don't have that much of, what do you say, that they don't have those facilities also. So lack of awareness of the importance of special needs also, lack of awareness and motivation among school as well as special schools also. The problems arise right from the community. Firstly, I'm not talking about people who are rich, or I'm not talking about people who are, you know, very aware of these things, or they are very affluent people. I'm talking about those in those communities, and I'm talking about that population of India which is living in villages, rural, which is living in slums, who are living in like small communities, you know, who are living in those jhuggi jhopdis. Many people are not aware. So problems arise from there. We have to make them aware of what is integration, how can their child go to a nearest government school or a nearest resource center,
or how can a child go to a special school if the needs are more? So it's not that special schools are problematic. No, I will not say that, because the role of special schools is also very important at present also. While we are moving more into inclusion, we are moving more into integration, and that way inclusion, integration, and otherwise also so-called pure inclusion policy what we are following. But even looking at that also, I feel that still the importance of special schools is still there in many other ways. So I'll give you an example. Suppose a child is with moderate difficulties. Moderate, you can say moderate, moderate, not, I will not say locomotor, for that a school can always prepare itself. Suppose a child is with moderate, you can say like moderate to severe learning difficulties, or he is a child with mental retardation. In a normal school setting, in a normal classroom setting, where other 30 children out of 30, 20 are 15 are average, 10 are brilliant, 5 other are okay, above average, where I have to accommodate this particular child in this class. Suppose social study is going on at the level of class 4, and the teacher is rising the level to little higher side to accommodate those also who are brilliant, to accommodate those also who are gifted children. And for that particular teacher, sometimes it's very difficult to accommodate this child who has moderate mental retardation, like a child with Down syndrome. So for that particular child, you need functional curriculum. Sometimes you need to adapt your curriculum in such a way that it becomes purely functional. Some here limitations are, so limitations we should are, respect yes. that. Yeah. So for that particular child, I would appreciate that if we can get some exposure in a special school, or if there is that kind of a setup inside the mainstream school. It's always better. If that kind of a setup can be inside the mainstream school, nothing like it. It will really benefit that child, because that particular child will get academic benefit from those people who can do it at his level, and at the same time he will be integrated for other activities with those mainstream children, with the mainstream setting. So that child will get the maximum exposure with people, with children who are mainstreamed, and academic curriculum at his level. We have broken it down to his level, we are following it at his level, we are doing it. So like this is a kind of a setup inside the mainstream school. Here we are preparing this child. This child is bright enough, but this child still needs preparation. So in one-on-one situation, in 1:2 situation, or maybe in a smaller group situation, we are preparing this child for the inclusion. Like tomorrow, if he goes to a normal classroom setting, he should be able to work at par with others. He should be able to work at par with the curriculum of the mainstream. Problems in the regular, like when we talk about problems can come anywhere and everywhere. Like I was telling you, problems can be in elementary school also. Large number of learners who have difficulties in learning, communication, emotions and behavior. So there are many learners fail in study and drop out. They drop out. Why do they drop out? Because in an elementary school, where it is, again I am repeating that term again and again, that mainstream setup is there, mainstream curriculum is there, but there is not even a single special educator who is attached to this school. This particular child who is having difficulties would not be able to work at par with others. So what will that lead to? That will lead to behavior problems. That will lead to frustration problem, self-esteem problem. What will happen to this child? Tomorrow this child can he can be one of the dropouts, or he can stop studying, or somehow the teacher doesn't know how to teach him. So here we need the support of other professionals who are attached to special schools or who are attached to an integrated setup. Then the quality of the provided elementary education is quite poor, because just a few professionals who work in rural areas, and they lack sufficient training and facilities. The regular elementary schools cannot accept children with disabilities, since they have no experiences and facilities to provide some assistance for children with disabilities. So this is what I was telling you. If there is no facility, if it is a normal elementary school like any other school, then how will that particular child who have difficulties, or children with difficulties, with different difficulties. It's not that only a child with mental retardation will come. A child with visual impairment can come, a child with locomotor impairment can come, a child with blindness or hearing impairment can come. So are they ready? Are they ready with those kind of facilities?
Are they ready with those kind of professionals to work with these children, or are their teachers ready to work with these children? So all these problems have to be considered. यहाँ पर हमने बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझने की कोशिश किया कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन किस तरह से डिफरेंट है, और खास करके दोनों की हमने कमियों को भी समझा कि यहाँ पर जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन की भी एक अपनी लिमिटेशंस हैं, और कहीं न कहीं स्पेशल स्कूल्स की नीड्स तो कहीं न कहीं बनी ही हुई है। लेकिन एक चीज, चूंकि आज का हमारा सब्जेक्ट ये है कि इंटीग्रेशन और इंक्लूजन के वो हम समझना चाहते हैं, थोड़ा सा करिए आप ये बता सकें कि इंटीग्रेशन की शुरुआत कहाँ से हुई, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ और किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, तो हमें समझने में थोड़ा सा ज्यादा मदद मिलेगी। जैसे कि आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं, मैंने लिखा है कि इट इज अबाउट इंटीग्रेटेड एजुकेशन हिस्ट्री। हाउ डिड इट स्टार्ट, हु स्टार्टेड इट एंड व्हेन डिड इट स्टार्ट? While special education began in India with the establishment of special schools, definitely earlier there were special schools for children with mental retardation, schools for children with visual impairment like NAB, National Association for Blind, school like BRA, Blind Relief Association, school for hearing impairment. But was that a good idea to isolate them in different special schools? Then the government thought about it again, and then they talked about, again it was in 1960s to 1970 that integrated education began to be educated. However, after 1994, inclusive education is strongly recommended. Over the years, the government has launched various programs and schemes to meet its commitments towards the education of children with disabilities. It started at that time, but after that the government is working, and they have been working on it. Then many other policies and many other legislation, many other things came up. Among the first of these efforts was the project Integrated Education of the Disabled Children, launched in 1987 in collaboration with UNICEF. First of all, they thought about this project. This project was on integrated education of the disabled children, and they also launched it in 1987. So it was long time back. Now it is 2012. In 2012, we are talking about complete inclusion policy. And now in 1970, they started, around in 1960 and 1970, they started working on it. In 1987, they came up with it. And this project was, launched up in collaboration with the UNICEF. In 10 blocks, in 10 states and union territories across the nation. So step by step, they started it. They said, taking note of the outcomes and recommendation of the PID, Project of Integrated Education of the Disabled Children, the Integrated Education for Disabled Children scheme, which was initially launched in 1974, was subsequently revised in 1992. So this is about the history, how they started and when they revised it, and then when again they started, when they started working on it. Integrated Education of Disabled Children, this was another step. This scheme provides educational opportunities for disabled children in common schools to facilitate their attention in the school system and also to place in common schools. Such children already placed in special schools, after they acquire the communication and daily living skills at the functional level, the scheme provides for the following: actual expense on books and stationery up to rate rupees 400 per annum, actual expenses on uniform up to rupees 200 per annum, transport allowance up to rupees 50 per month. If a disabled child resides in the school hostel within the school premises, no transportation charges would be admissible. Reader's allowance of rupees 50 per month in case of blind children up to class 5. Escort allowance for severely disabled children with lower extremity difficulty at the rate of rupees 75 per month. Actual cost of equipment subject to a maximum rupees 2000 per month for 5 years. तो यहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे स्टेप्स आप बता रहे हैं कि किस तरह से हमको इंटीग्रेशन के बारे में हमको लिया गया, किस तरह से स्टेप्स आगे बढ़े। यहाँ पर दोस्तों हम एक छोटा सा ब्रेक लेने जा रहे हैं, और ब्रेक के बाद में जब वापस आएंगे तो इसके इन स्टेप्स के बारे में थोड़ा सा और स्टडी करेंगे, और उसके बाद को समझने की कोशिश करेंगे कि इंटीग्रेशन और से जब अगला स्टेप हमारा आता है इंक्लूजन का, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस था और किन वजहों से इस बात को ज्यादा बेहतर समझा गया कि बच्चों को इंटीग्रेशन की बजाय इंक्लूजन के सिस्टम में डाला जाए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम चर्चा कर रहे हैं इंटीग्रेशन वर्सेस इंक्लूजन के बारे में। और इंटीग्रेशन के बारे में आपने देखा कि हमारी एक्सपर्ट ने आपको बताया कि किस तरह से इसका एक डेवलपमेंट हुआ और किस तरह की पॉलिसीज रही जिन्होंने की हेल्प किया इंटीग्रेशन को कंटिन्यू आगे बढ़ाने के लिए। अभी हम कुछ और पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसके पहले एक बार मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा कि अगर आप हमारे एक्सपर्ट से इस मुद्दे से जुड़ा हुआ कोई सवाल करना चाहें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नोट करिए हमारे नंबर्स जिन पर कि आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-11-2008। हमारा फोन नंबर 011-265-11611 और हमारा फैक्स नंबर है 011-265-11609। हमारी ईमेल आईडी rehabstd@ndc.bsnl.net.in और हमारी वेबसाइट www.rehabcouncil.nic.in। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैम, अभी आप इंटीग्रेशन की कुछ पॉलिसीज के बारे में बात कर रहे थे, प्लीज उसको कंटिन्यू करें और बताएं कि और कौन सी ऐसी पॉलिसीज थी जिन्होंने की इंटीग्रेशन की भूमिका अपनी निभाई। बेसिकली हम बात कर रहे थे इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, and we were also talking about what facilities the government was giving under this. Then later on, this policy, this scheme, basically not policy, this scheme was shifted from the Ministry of Welfare to the Department of Education, and greater assistance was provided to children with disabilities in mainstream school. The government did this work in such a way that now after that second step, or maybe you can say it was the third step, when they asked the schools to follow this scheme. The IEDC is currently operative and offers financial assistance towards the salary of teachers, assessment and provision of aids and appliances, training of special teachers, removal of architectural barriers, provision of instructional material, community mobilization, early detection and resource support. So this scheme was under MHRD 1992. Then integrated education practices we will talk about now. The theoretical approach centered on individual resources for labeled children, special support for disabled children, one individual curriculum for one child. जब हम इस सब की बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि स्पेशल सपोर्ट बच्चों को दिया गया, उन बच्चों को दिया गया जिनको स्पेशल नीड्स थी, बट इट वाज गिवन इनसाइड द स्कूल आल्सो ओनली. It was like the trial was to give it inside the school only, and one curriculum for one child means tailor-made curriculum. IEPs, individualized education program. If a child has suppose if there are 4 children with special needs and every child is different, some children's maybe one child's let's name this child, maybe that Ram has different needs because he's a visually impaired child, and the other one maybe Natasha has moderate learning disability and this specific learning disability. This child has a different need. Another child can be with Down syndrome or can be with borderline intelligence. His needs will also be different. Then the fourth one maybe is a child with hearing impairment. So how to accommodate these children, because they have different needs. So every child will have a different curriculum. Will maybe like you're adapting the same curriculum to each child's level through IEPs, through individualized education programs, and this is called tailor-made curriculum. Then individual projects for disabled children. Special teachers supporting children with special needs. Yes, there should be appointment of special teachers. Special education influencing mainstream school methods. Controlled by experts. Here when we are saying special education influencing mainstream school methods means when we are in a mainstream school, we have to have that influence. Look, like there are some children with special needs also. How to integrate them? Suppose if they are going for any activity, that activity teacher should know how to handle this particular child. So you are sharing the child's profile with that teacher. You are preparing that teacher. At the same time, you are preparing the child also. You have to prepare the child for settling in that group of 30 children, whereas he was getting this in group of 3 or 4. With so much of individual support, with so much of individual input also. Like if you look here, this particular child is a child with borderline intelligence, and this child needs functional curriculum because somehow he is not able to work at the mainstream curriculum. So we have adapted the curriculum in EVS, like we are really simplifying the curriculum of class 3 level.
But in maths, we are following the functional maths curriculum for him because this child is not able to cope up with academic needs. But these two children are now like mainstream children. They are able to cope up with the mainstream curriculum. So how to adjust them? कहीं न कहीं एक टीचर्स के बीच में ये एडजस्टमेंट वाली बात आती है कि टीचर किस तरह से इस प्रॉब्लम को फेस करेगा कि उसी क्लास में, एक ही क्लास में उसके पास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी नीड्स कुछ डिफरेंट हैं और वहीं पर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी नीड्स कुछ डिफरेंट हैं। और खास करके अगर हम इस बात को ध्यान में रखें, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट इस फील्ड में काम करने वाले कहते हैं कि हर एक बच्चे की एक अपनी नीड होती है, उसकी अपनी एक यूनिक स्टाइल होती है जिस तरह से वो किसी चीज को ज्यादा बेहतर ढंग से सीख सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में एक टीचर के सामने ये चैलेंज कहीं बहुत ज्यादा आता है कि सामने जो बच्चे बैठे हुए हैं उनकी नीड्स बड़ी डिफरेंट हैं, तो कैसे वो क्लास को और कैसे करिकुलम को फॉलो करेगा और किस तरह से आगे बढ़ेगा। कहीं ऐसा ही एक हम कहें कि ऐसे चांस बनते हैं जहां पर कि ऐसे स्पेशल नीड्स के बच्चे को जितना अटेंशन मिलना चाहिए, जितना स्पेशली उसको प्रेफर करके उसको सिखाया जाना चाहिए, वहां पर कुछ छूटने के चांसेस बनते हैं। जो आप बात कर रहे हैं, मैं इस मुद्दे पर आना चाहूंगी। एक्चुअली जब आप जो बात कर रहे हैं वो इंक्लूजन में बहुत फेस करना पड़ता है, मेन स्ट्रीम टीचर्स को बहुत फेस करना पड़ता है। बिकॉज समहाउ जब वो 30 बच्चों को पढ़ा रही होती है और इन 4 बच्चों को जिनको डिफिकल्टीज है, और मे बी यू कैन से दैट आई विल नेवर कॉल इट डिफिकल्टी, आई विल से दीज चिल्ड्रन विद डिफरेंट नीड्स, their needs are different. I know some teachers have difficulty in handling them, some teachers have difficulty in coping up with that particular situation, how to cope up with the curriculum accommodation, how to cope up with teaching style. They have to modify their teaching style, but that's more of inclusion where the teacher is preparing herself. But at present we will talk about inclusion also in detail, because somehow I feel that even after the implication of RTE policy, pure inclusion is not possible. Somehow we have to combine that inclusion as well as integration, but in a different way now, because we want children to be inside the mainstream school, we want children to cope up with the mainstream school, and we want the school to modify its infrastructure, modify its teachers' teaching style, teaching learning material also, so that these children with different needs can also be accommodated. Children whoever is able to be accommodated in the mainstream school, in a mainstream school classroom setting, we are trying that, we try that. But at the same time, out of those 5 children, 2 children cannot cope up with the same kind of a curriculum, whether you modify the teaching style or you modify the quiz style, because you have to simplify it, you have to give them simple quizzes, you have to teach them with the functional approach in your mind. So it is a combination of both. That's why today we are presenting it on inclusion versus integration. Or you can say like towards the end of it, when we come to the conclusion, it will not be versus inclusion, it will be inclusion plus integration, which is going to be successful, which is going to make the so-called inclusion, make the education of these children with special needs successful. So here, if you look at it, if we talk purely about integrated education now, we have different models for implication of integration. Methods or ways. Yes, government has talked about different models, and these are the models which we are going to discuss now. So like if you look here, resource center model. Again, resource center model, like because government is talking about only 2 special educators in a school, if it is a secondary school, 1 in primary and 1 in secondary. But how can 2 special educators accommodate? If you look at it in every form, like in class 1, you will find 5 children with special needs along with some others who might need your help. So maybe like 10 children per 100, I can say. So if I look at class 1 to PV, like class nursery, KG 1, 2, 3, 4, 5 up to class you can say 8 or 9th, then there are so many children. So can 2 special educators accommodate these 2 children, so many children in a classroom setting? So here the resource room model, or you can say resource center model, works. But how does it work? Again, it becomes different. Something will be worked upon, something will be left. Like if I talk about resource center model, I'll just show it here. I'll just show it here in the resource center model, that the resource room is where all the facilities of special education is available, where the special educator is available. In this resource room, a special educator has TLM, teaching learning material, for these children who need her.
they have that they can conduct the remediation program, they can conduct home-based program, they can call the parents for the parent training program. How is that particular special educator is working in a resource room model? From that resource room, children are coming back to the resource room. Suppose a child was in English class and he didn't understand something. This child will come back to the resource room, teacher will work on the same concept with her or him according to his learning style, according to his level. The special teacher will break the curriculum in such a way that it will go to his level. Suppose a child knows everything but he is not able to write. The special teacher can help him in writing his exam. Teacher can help him in written expression also, or teacher can work on one or two more skills which are required for, like organization skills, which we always see children lag it, they are lagging behind in it. Then we always see the writing skills, then reading comprehension is there, then maths is there, then other life skills like self-esteem is down, sometimes self-respect is not there. So all these skills which have to be worked upon, they go back to the resource room for these. They go back to the resource room for the remediation of academic subjects. So a special teacher sits in the resource room and she or he works with the child. Then if you look here, the general education and special education teachers meet to co-plan and prepare lessons. This is what I'm talking about, collaborative teaching now. How do we do collaborative teaching in school? Like if you're talking about inclusion, now the more and more inclusion is becoming possible. I will never say that it is a failure. No, it is not going to fail. It is not going to fail for those children who have mild needs. For children who have mild needs, a mainstream teacher, the general education or the general educator and special education teachers meet to co-plan. They can always meet with each other. I can meet with my colleague and we can always plan it together. What is the plan for the next week? What is the topic suppose what is the topic in social study? Suppose the topic is the northern mountains. And the special educator can help the teacher to plan or to modify her teaching style so that a child who is sitting in that classroom can be accommodated easily. Teaching methodology can be according to his or her learning style. Teaching level can be broken down to his or her learning style. And then prepare lessons, activities and projects that incorporate all learning modalities. Together, the general education and special education teacher carry out instructions employing a range of methodologies. So here, how is the special educator helping the teacher? Special educator is helping the teacher to modify the teaching methodologies, to accommodate those children. If that particular child needs again help in copying from the board, special teacher is there inside the class to help him in copying down, to help him in writing. Suppose that child is getting tired soon, the teacher is writing for him. Common planning time for teachers is essential. Like here, the special educator is inside the class. She is helping those children. One of this child is having difficulty, the other child is a mainstream child. So buddy teaching, all that we also apply those strategies. Then students with disabilities who receive integrated co-teaching, collaborative team teaching services are educated with age-appropriate peers. In the general education classroom, ICT CTT provides students the opportunity to be educated alongside their non-disabled peers with the full-time support of a special education teacher throughout the day to assist in adapting and modifying instructions. So what I was telling you earlier, sometime back, what I was telling you, that there is a combination of inclusion and integration. What is the special teacher doing here? Firstly, this teacher is preparing the teacher, other teacher, so-called mainstream teacher, and preparing the teacher to modify her teaching methodology. But at the same time, this special teacher, special needs teacher, special educator is helping the child, is preparing the child also. How? Is preparing the child to copy down the notes, is preparing the child to organize his material, is preparing the child to understand what the teacher is saying. So what is it? It is a combination of somewhere that we are preparing the child also and we are preparing the part of the school, the teacher also. बच्चे की तरफ से और टीचर्स और स्कूल की तरफ से, दोनों तरफ से हमको प्रिपरेशन की जरूरत है यहाँ पर। लेकिन फिर वही एक लिमिटेशंस की अगर बात करें तो फिर वही पर बात आकर के रुकती है कि चूंकि एक बच्चे की अपनी नीड्स होती हैं, एक टीचर कितने ऐसे बच्चों को हैंडल कर सकती है। और पूरे स्कूल में अगर जैसा कि अभी आपने कहा था कि सरकार के हिसाब
हिसाब से मिनिमम 2 टीचर्स होने चाहिए। अगर 2 टीचर्स को स्कूल रख करके फिर कितने क्लासेस में और कितने बच्चों की कितने एक समय पर कितनी जगहों पर पहुंच सकता है सभी बच्चों को हेल्प करने के लिए। यहाँ पर ये सबसे बड़ा। अगर हम 2 टीचर्स की बात, जैसे अभी हम आगे और भी डिफरेंट मॉडल्स पे भी जाएंगे, अगर हम 2 टीचर्स की बात करें और उस स्कूल की बात कर रहे हैं जिसमें 1500 से लेके 2000 तक की स्ट्रेंथ है बच्चों की, जिसमें नर्सरी क्लास से लेके बच्चा 12 तक पढ़ रहा है, तो 2 टीचर्स के साथ, 2 स्पेशल एजुकेटर्स के साथ पॉसिबल नहीं है अनलेस एंड अनटिल हम स्कूल को प्रिपेयर कर रहे हैं और टीचर्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। और टीचर्स को प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे इंक्लूजन का बहुत बड़ा रोल हो जा रहा है। अगर हम जी यहाँ पर ये जो 2 टीचर्स की रखने की गवर्नमेंट ने बात कही है, ये इसका प्लान थोड़ा सा बेहतर ढंग से स्कूल खुद कर सकते हैं कि ये दोनों स्पेशल एजुकेटर्स जो अदर टीचर्स हैं ऐसे बच्चों की प्रॉब्लम्स के लिए अगर उनको थोड़ा सा गाइड कर सके, थोड़ा सा उनको बता सके, तो वे भी एक स्पेशल नीड्स के बच्चे के लिए प्रॉब्लम्स को उसके समझने के लिए, उनको हेल्प करने के लिहाज से अगर थोड़ा सा ज्यादा बेहतर ढंग से तैयार हो सकेंगे तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पर हमारी ये इंटीग्रेशन की बात आती है वो कहीं न कहीं पूरी हो जाती है। जी। यही मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर हर एक जिस क्लास में बच्चे हैं, आपके पास 4 से 5 बच्चे हैं पर क्लास में, और अगर आपके पास 8 से 10 बच्चे हैं 100 बच्चों में, तो अगर एक स्पेशल एजुकेटर भी एक पर्टिकुलर क्लास 4 या क्लास 5 या क्लास 2 या क्लास 8 या क्लास 7 के साथ होगी, तो दैट पर्टिकुलर स्पेशल एजुकेटर फर्स्टली कैन हेल्प द अदर टीचर टू मॉडिफाई टीचिंग मेथडोलॉजीज, हेल्प द अदर टीचर इन coping up with the difficulties what she or he is facing, and that particular special educator can also help those 5 children who need her help. So एक तभी मैं आपसे बोल रही हूँ कि 2 स्पेशल एजुकेटर को अगर हम पूरे स्कूल में रखने के लिए कहते हैं तो उससे हम कुछ तो अचीव करेंगे। आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज गोइंग टू बी अ फेलियर, नो, कुछ तो अचीव करेंगे। कुछ नहीं होने से अच्छा कुछ तो अचीव हो रहा है ना। आज पहले तो कुछ भी नहीं था। पहले तो स्पेशल एजुकेटर्स को कोई जानता ही नहीं था। स्पेशल एजुकेटर्स का मतलब होता था कि स्पेशल स्कूल में जाके काम कर लो और like it is not even a salary, isn't it? पहले तो होता था कि it was just like a social work, कि social work कर हम बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, it is a part of our social work. But now at least government has started recognizing, that is a big initiative which government has taken. At least schools are recognizing what special education is, what a special educator is. And tomorrow if you talk about complete inclusion, you will see evolution here also. Special educator has to be the part of the mainstream setup, like a resource teacher, like any other mainstream teacher, and she has to show that this kind of a planning can also be done to accommodate those children who are with special needs. It is not only that we are teaching here, we don't have to teach only at a higher level to accommodate those brilliant children. We have to teach somewhere here, neither at the lowest level nor at the highest level, somewhere in between, so that children who have needs, and we have to use many other teaching learning material, we have to use audio visual things to accommodate children with special needs. So like modifying instructions, integrated co-teaching ensures that students master specific skills and concepts in the general education curriculum, as well as ensuring that their special education needs are being met. Here we are talking about the curriculum being achieved, but at the same time their needs are also being met, including meeting alternate curriculum goals. The title of the service was changed from collaborative team teaching to integrated co-teaching. So that is why they are calling it integrated co-teaching. Now this child is being integrated in a mainstream school in class 4. She is going for all the activities. She is with other 30s for the schedule, for the morning schedule, for the evening schedule, for the afternoon schedule, for co-curricular activities, but for her academic needs are very different. Her chronological age is 10 and she is in class 4 otherwise, but academic needs are not even of class 2. So we have adapted her curriculum at a functional level so that her academic needs are also being met. Child is going happy, child is going back happy, achieving many things in academic along with other skills like socio-emotional, independent skills, enjoying co-curricular activities, learning some part of the music, learning some art, but at the same time learning some academic also at her level. The determination of whether integrated co-teaching is an appropriate recommendation for an individual student with a disability must be made on an individual basis. Why we are saying here, like this is what we have been talking for long. Children are of different levels. Each child has got different needs. Hearing impaired child has got different needs. He needs to have many visual aids, visual teaching learning material.
Then a child with visual impairment needs more of hearing input. Child with learning disability might have his own learning styles, and another child with borderline IQ needs to have curriculum at a lower level. So look at this, 5 different children, 5 different needs. It is difficult, but it is not impossible. It has to be done, and it is being done. But here and there, we have to, somewhere we are modifying inclusion, somewhere we are modifying integration, somewhere we are combining both, somewhere we are just, applying both. So this way, for some students, integrated co-teaching would be an alternative to placement in a special class, with the added benefit of having both a special education and a general education teacher deliver the curriculum to the student. So here he is benefiting from integrated co-education, integrated co-teaching. Now, collaborative teaching in general classrooms is not beneficial for children with special needs who require, but for whom it is not benefiting. Definitely it is going to benefit many children with special needs, but these children have mild difficulties. But let us see who are the children whom this collaborative teaching in a mainstream classroom is not benefiting. Children who require so much of the teacher's time that the teachers cannot give adequate attention to the needs of other students in the classroom. There are some children who need more time to understand the concept. Suppose other children are learning it in 10 minutes. The teacher can extend that to 15 minutes. But it is not possible for the teacher to extend it for next 20 minutes more. Because teacher also has to complete the curriculum. She also has her deadlines. The student is so disruptive in the general education classroom that the education of the student or other students is significantly impaired. He is so disruptive. He is not able to sit in the classroom setting at all. He is running from here to there. If a child is there who is running from the door to this wall and again from wall to the door, this child would not be able to. It is not somehow it is difficult to accommodate that child in a general classroom setting of 30 other children. And then the student requires the curriculum to be modified so significantly that it bears little relation to the instructions in the classroom. Like I told you, a child with Down syndrome, her level was nowhere near the class 4. Her level was so low that we had to adapt the curriculum functionally. So will that child benefit? No. I will say that child will be lost, completely lost in a mainstream classroom setting when we are talking about academics. We are not talking about other activities, music, art, dance. We are not talking about those activities. We are talking about the academic part. So this child will be completely lost. Then there is no regulatory maximum number of non-disabled students in an integrated co-teaching class. However, the number of non-disabled students should be less than what the others An important consideration in determining the number of students with disabilities and non-disabled students on an integrated classroom roster is that the ratio must not result in de facto, that is segregated class, which would undermine the philosophy of inclusive practice. यहाँ पर मैम एक और फिर से वो बात हमारी कहीं न कहीं पर आ जाती है कि एक लेवल की बात हमको समझना पड़ेगा कि जैसे आइडियली ये समझा जाता है कि एक टीचर के लिए हम 10 to 12 स्पेशल नीड्स के जो बच्चे हैं उसको आइडियली वो इतना हैंडल कर सकता है, इससे ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए. लेकिन जैसा कि आपने कहा कि यहाँ आइडियली 6 ही होना चाहिए जी, और अगर इंक्लूजन है, कंप्लीट इंक्लूजन है तो नॉट मोर देन 4 होना चाहिए जी इन अ पर्टिकुलर क्लास. तो यहाँ पर ये कुछ प्रैक्टिकल ऐसी लिमिटेशंस हैं जिनको कि कहीं न कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा और हमारे स्कूल्स और हमारे टीचर्स इस प्रॉब्लम को किस तरह से फेस करते हैं, इसी बातों पर तो थोड़ा सा और हम चर्चा करेंगे. अभी एक ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद में वापस आने के बाद इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा होगी.
The chief handicap of the blindness is not blindness, but the attitude of seeing people towards them. आइए जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि बधिरांधता यानी डेफ ब्लाइंडनेस क्या है। बधिरांधता एक स्थिति है जिसमें दृष्टिहीनता एवं सुनने की शक्ति में कमी आती है तथा जिससे विचारों के आदान प्रदान और रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति में समस्या उत्पन्न होती है। बलराम एक 9 साल का बधिरांत बच्चा है। वो एक प्री मैच्योर बच्चा है जिसका शारीरिक विकास उसकी आयु के अनुरूप नहीं हुआ था। वो एक निम्न वर्गीय श्रेणी से संबंध रखता है तथा 5 साल से लगातार नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड दिल्ली के प्रशिक्षण कार्यक्रम से संलग्न है। इन 5 सालों के अंतर्गत उसे रोजमर्रा के कामों में, हलन चलन में, उसकी शैक्षणिक जरूरतों के अनुसार संप्रेषण द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है जिससे वो इन सब क्रियाओं में स्वावलंबी बन सके। बलराम बिना किसी सहायता के चाकू से फलों को काट सकता है। उनके छिलकों को कूड़ेदान में डाल सकता है। अपने बर्तनों को खुद साफ कर सकता है। उन्हें सही जगह पर रख सकता है। सही बर्तनों का चयन करके खुद खाना खाता है। एवं पानी की बोतल निकालकर पानी भी पीता है। इन सभी क्रियाओं में वो टेक्चुअल साइन लैंग्वेज से निर्देशों को ग्रहण करता है और अपने भावों को व्यक्त करता है। टेलर फ्रेम और ब्रेलर द्वारा गणित, पठन लेखन में भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। सभी बच्चों की तरह उसका भी एक मनपसंद खेल है। उसे सेलफोन को अपने कानों पर लगाकर उसका कंपन महसूस करना अच्छा लगता है। कहा जाता है, वॉकिंग विद अ फ्रेंड इन डार्क इज बेटर देन वॉकिंग अलोन इन लाइट। कहने का तात्पर्य है कि वो लॉन्ग केन ट्रेवल, टैक्टाइल पाथ, ट्रेलिंग और लैंडमार्क्स द्वारा हलन चलन में भी सक्षम है और व्यायाम संबंधी क्रियाएं जैसे ट्रेडमिल, स्टैटिक साइकिल का स्वचालन भी कर सकता है। कहा गया है, द बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड कैन नॉट बी सीन और इवन टच्ड, दे मस्ट बी फेल्ट विद द हार्ट।
वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम चर्चा कर रहे हैं इंटीग्रेशन वर्सेस इंक्लूजन के बारे में, और आपने देखा कि हमारी एक्सपर्ट बता रही हैं कि किस तरह से इंटीग्रेशन के डिफरेंट मॉडल्स हैं, इनको डेवलप किया गया है। और ये डिफरेंट अपने अपने ओपिनियन की बात होती है। किसी एक्सपर्ट ने किसी एक स्पेशल मॉडल को ज्यादा बेहतर समझा और किसी दूसरे ने किसी दूसरे को। यहाँ पर हम डिफरेंट मॉडल्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं और इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि किस मॉडल में किस तरह से बच्चों को ज्यादा बेहतर ढंग से गाइड किया जा सकता है। अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारी एक्सपर्ट से इस मुद्दे से जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछना चाहें तो आपका स्वागत है। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर 1800111208 पर। साथ ही हमारे फोन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 01126511611 और हमारा फैक्स नंबर 01126511609। हमारी ईमेल आईडी rehabstd@ndc.bsnl.net.in और हमारी वेबसाइट www.rehabcouncil.nic.in। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैम, अभी हम बात कर रहे थे क्लस्टर मॉडल की, और आप उसमें बताएं कि क्लस्टर मॉडल क्या होता है और किस तरह से ये ज्यादा बेनिफिशियल होता है कंपैरेटिवली टू एनी अदर मॉडल। या Cluster integrated education model, it is a part of an integrated model. It is a type of integrated model. Cluster 1, we can say education for the visually handicapped from the former schools for the blind and partially sighted. Here, what do we do? हम बच्चों को अलग से क्लस्टर में डिवाइड कर देते हैं। विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, हेयरिंग इम्पेयर्ड, एक ही क्लास में जितने बच्चे हैं उनको हम डिफरेंट क्लस्टर में डिवाइड करने के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द नीड्स, हम उनको ग्रुप में, क्लस्टर मीन्स अ ग्रुप में एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। Cluster 2, education for people with hearing impairments or communicative handicaps from existing schools for deaf or hearing impaired pupils and pupils with severe speech disorders. Cluster 3 is education for physically, mentally and multiple handicapped pupils and chronically sick pupils. Cluster 4 is education for pupils with behavioral disorder from existing schools for severely maladjusted children, chronically sick, psychosomatic children and pupil in pedagogical institutes. यहाँ पर जो बेसिकली एक चीज आउट निकल करके सामने आती है वो ये है कि एक ग्रुप में हम ऐसे बच्चों को एक साथ में रखते हैं जिनकी नीड्स कुछ आपस में मिलती जुलती हैं और उनकी स्पेशल नीड्स एक जैसी हैं। यस, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है इस बात को। अगर मैं इन क्लस्टर्स को देखती हूँ, क्लस्टर 1, 2, 3, 4, 5, और अगर मैं हर एक क्लस्टर पे नजर डालती हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि किस तरीके से हम बच्चों को ग्रुपिंग में कर रहे हैं। विजुअली इम्पेयर्ड है तो उसकी एक ग्रुप बना दिया, हेयरिंग इम्पेयर्ड है तो एक ग्रुप बना दिया, जैसे कि पहले स्पेशल स्कूल्स में होता था। जैसे अभी भी काफी स्पेशल स्कूल्स हैं। अगर NAB, हम नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड देखते हैं तो उनका जो बच्चों का स्कूल है, दैट इज अ स्कूल फॉर लोअर साइटेडनेस, दैट इज अ स्कूल फॉर विजुअली इम्पेयर्ड और ब्लाइंड चिल्ड्रन। BRA ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन। देन अलीगंज का जो हेयरिंग इम्पेयर्ड का अलग से एक छोटा सा सेटअप अगर हम चलाना शुरू कर देते हैं, या मेंटली रिटार्डेड का अलग स्कूल बना देते हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि सारे ही बच्चे एक ही डिफिकल्टी के, दो उनके भी लेवल्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे होंगे अगर हम एकेडमिक की बात करें या स्किल्स की बात करें, लेकिन समहाउ मेनी डिफिकल्टीज पे हम एक काम कर सकते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि हमें पता है कि अगर चिल्ड्रन आर विद विजुअल इम्पेयरमेंट तो देयर आर समथिंग विच विल वर्क फॉर एवरी चाइल्ड, दैट इज मोबिलिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो मोबिलिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम होना ही चाहिए स्कूल में। तो इस तरीके से हम क्लस्टर्स में डिवाइड करके उनको इंटीग्रेट करने के लिए प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके बेनिफिट्स तो होंगे ही, क्यों नहीं होंगे। बेनिफिट्स ये है कि उन बच्चों को उनकी नीड्स के हिसाब से काफी कुछ मिलेगा, चाहे वो करिकुलम है, चाहे वो स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। लॉसेस वेयर दे आर लूजिंग ऑन सोशल स्किल्स विद अदर चिल्ड्रन, दे आर लूजिंग ऑन लर्निंग फ्रॉम अदर्स, दे आर लूजिंग ऑन many other development. If I look at socio-emotional development, if I look at language development, they're losing on to that. यहाँ मैम एक चीज थोड़ा सा और यहाँ पर क्लियर करना ज्यादा बेहतर होगा कि ये क्लस्टर मॉडल के बारे में जैसे हमने बताया कि स्पेशल नीड्स के अकॉर्डिंग बच्चों के डिफरेंट क्लस्टर बना दिए जाते हैं। तो क्या ये एक सेक्शन के बारे में बात हो रही है? जैसे एक सेक्शन में मान लीजिए 30 स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं, और उसमें से हम बच्चों को पिक कर रहे हैं और उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग जी, ये बच्चों को नीड्स के हिसाब से, खाली सेक्शन की बात नहीं हो रही। विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है, क्लास 1 में भी हो सकता है, क्लास 4 में भी हो सकता है। जरूरत नहीं कि आपको 6 बच्चे विजुअली इम्पेयर्ड क्लास 4 में ही मिलेंगे या क्लास 7 में ही मिलेंगे। तो जहाँ जिस लेवल का बच्चा, उनके लिए उनको अलग से क्लस्टर बना के उनकी नीड्स पे काम किया जा रहा है। बट इसके जैसे कि मैंने आपको बताया कि नुकसान भी है, फायदा ये है कि उन बच्चों की कुछ नीड्स ऐसी होंगी जिसपे काम करना जरूरी होगा, जो नीड्स कंबाइंड या कॉमन नीड्स होंगे जिसे आप बोलते हैं। पर कुछ नीड्स, काफी नीड्स ऐसी होंगी जो डिफरेंट भी होंगी। एंड
अदरवाइज उन बच्चों की कुछ जरूरतें भी होंगी और उन बच्चों को कुछ ज्यादा एक्सपोजर देने की जरूरत भी होगी हमको एज एजुकेटर्स। सो हमको उनको ऐसी जगह पे डालना है जहाँ पे वो ज्यादा बेनिफिट हो सके। यहाँ पर मैं इस चीज को समझना चाहता था कि ठीक है, हमारे क्लास 1 में, क्लास 2 में या अदर क्लासेज में जो बच्चे साइड से रिलेटेड जिनकी प्रॉब्लम है उनको इकट्ठा करके हमने देखने से रिलेटेड या कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम जो भी हमको बच्चों को ट्रेन करना है उसको हमने सिखा दिया। लेकिन जहाँ पर एकेडमिक्स की बात है वहां पर हर बच्चा अपनी क्लास में बैठेगा और अपनी क्लास के बच्चों के साथ में आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। बच्चे ग्रुप में बैठ के अलग से ग्रुप में बैठ के पढ़ेंगे, तो जो कि मुझे लगता है कि अगर तो उनकी एकेडमिक नीड्स आर सेम, अगर उनके लेवल सेम है तो ठीक है, हम एकेडमिक उनको प्रिपेयर कर रहे हैं, बट और चीजों के लिए उस बच्चे को इंटीग्रेट होने की और चीजों के लिए उस बच्चे को इंक्लूड होने की बहुत जरूरत है। औरों के साथ, जहाँ मैं इंक्लूजन की बात कर रही हूँ वहाँ मैं औरों के साथ कर रही हूँ और मेन स्ट्रीम बच्चों के साथ बात कर रही हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं बच्चा बहुत सीखेगा उनसे। जी जी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग तो नॉर्मल माइलस्टोन्स अचीव कर रहे हैं, यानी कि दोनों ही चीजों को हमको एक साथ में लेकर के चलना होगा। जहाँ पर एकेडमिक्स या नॉर्मल चीजों की बात है वहां पर हम साथ में बच्चों को पढ़ने देंगे, लेकिन जहाँ पर स्पेशल ट्रेनिंग की वाली बात आती है इन बच्चों की नीड्स को ध्यान में रखते हुए वहां पर हम उनको कलेक्ट करके एक स्पेशल पीरियड लगा करके के लिए भी अलग करना जी पड़ेगा। जी, कई बार एकेडमिक के लिए भी अलग करना पड़ेगा। और अगर हम रिसोर्स क्लासरूम टीचिंग दोबारा से देखते हैं, इंटीग्रेटेड स्कूल्स विद रिसोर्स रूम टू वर्क एज अ सपोर्ट सेंटर्स फॉर नीडी चिल्ड्रन एंड द स्कूल्स with integration program for CWSN for children with special needs gradually moving towards inclusive school। जी, ये रिसोर्स क्लासरूम टीचिंग क्या है मैम? जैसे कि अगर हम अभी यहाँ पे आपने यहाँ पढ़ा कि रिसोर्स रूम में क्या हो रहा है, कि जैसे मैंने आपसे पहले भी एक्सप्लेन किया था कि स्पेशल एजुकेटर होती है, बट रिसोर्स रूम इज अ पार्ट ऑफ द स्कूल। बच्चों को इंग्लिश क्लास में गए, इंग्लिश नहीं समझ आया तो वो रेमिडिएशन के लिए, या वो इंग्लिश में पीछे है और क्लास से, और मैथ्स बिल्कुल ठीक कर रहा है क्लास के साथ, हिंदी क्लास के साथ कर रहा है, पर साइंस में थोड़ा क्लास से पीछे है, तो कौन कर रहे हैं, कहाँ जाएगा वो मदद के लिए? वहां पे special educator, the one who is sitting in the resource room, will help him with the remediation of these particular subject। और अगर उसकी क्विज को सिंपल करना है मैथ्स में या इंग्लिश में या उसमें, तो वो जो स्पेशल एजुकेटर है वो उसको वहां पर हेल्प करेगी। एक पूरे जो स्कूल का एटमॉस्फेयर है वहाँ पर एक स्पेशल सिटिंग है जहाँ पर कि बच्चे वापस जा सकते हैं, वहाँ पर जा सकता है और अपनी प्रॉब्लम बता सकता है कि इस तरह की प्रॉब्लम हमको यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर से मिल सकते हैं और स्पेशल एजुकेटर्स पेरेंट्स को भी ट्रेन कर सकते हैं जी, और इस तरह से बच्चे को ज्यादा बेहतर शिक्षा दी जा सकेगी। जी, बेहतर शिक्षा दी जा सकेगी ऐसा तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, कुछ नहीं होने से अच्छा कुछ सपोर्ट मिलेगी। जी जरूर। Then we have another model called integrated education itinerant model। Itinerary, like we always say that itinerary banana hai, suppose somebody is coming and we know that that person is, that delegate is coming from abroad and we have to make our itinerary for him. We have to take him here, then we have to take him there, and then we have to take him there. Like sometimes we do that. In this way, itinerant model says that specialist itinerant teacher with resource kit visits a cluster of schools. That particular teacher is called a resource teacher. That teacher has been given a cluster of 2-3 schools. That this on Monday this teacher has to visit this particular school because there are some children with special needs there. On Thursday this teacher has to visit the school number 2 where the other children are with special needs. And this particular teacher has to visit the 3rd school on Friday. So that itinerary has been given to the teacher, and this teacher will be there 2 to 3 times a week to assist the disabled. So this model is also there, and this model works in rural settings. But again, 100% you cannot achieve, but yes, something you can definitely achieve. यहाँ पर आपने बहुत सारे डिफरेंट मॉडल्स की बात किया है। एक चीज मैं यहाँ पर ये समझना चाहूंगा कि कौन सा स्कूल या कोई स्कूल किस तरह के मॉडल को अपनाता है, ये किन बातों पर डिपेंड करता है, या एक स्कूल को क्या चीजें खास करके ध्यान में रख करके किसी एक पर्टिकुलर मॉडल को फॉलो करना चाहिए, या आप इस फील्ड में काम करने वाली एक एक्सपर्ट के रूप में क्या सजेस्ट करेंगे कि सिचुएशन बेस्ड कभी इस मॉडल से हमने बच्चे को ट्रेनिंग दिया और कभी इस मॉडल से, क्या बेहतर रहेगा एक स्कूल के लिए? जी, अगर आप ऐसा पूछेंगे तो मुझसे, मेरे पास शायद इसका एक ही आंसर रहेगा कि कोई भी मॉडल आइसोलेशन में नहीं काम करता है जी, चाहे वो प्योर इंक्लूजन का मॉडल हो, चाहे वो प्योर इंटीग्रेशन का मॉडल हो, जी, चाहे वो प्योरली क्लस्टर मॉडल ऑफ इंटीग्रेशन हो या रिसोर्स रूम मॉडल ऑफ इंटीग्रेशन हो। यस, बट डेफिनेटली अर्लियर वी ओनली हैड स्पेशल स्कूल्स, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट इंटीग्रेशन एंड इंक्लूजन। Then we have to think about something which can, if you ask me to accommodate each child and every child,
keeping RTE, right to education policy also in mind, which says that children from EWS, economically weaker section, also will be there, who might have learning gaps, who might not have learning gaps. Then children with special needs will also be there. Then you are catering to children with special needs, you are catering to children with learning gaps, and these children can be from a rich background also, not only necessarily that only will from economically weaker section background will be there. So here, how to cater them, how to accommodate them, how to include them. Then you have to talk about the combination of inclusion versus and integration. Here I am saying inclusion versus integration. Why I am saying this? Because I want to make it clear. What is inclusion? What is integration? But when we come to the conclusion towards the end of it, you will see that combination of both is required. It is not only one model. Okay, if there is not even a single special educator in that school, the school is trying to, school gets ready to take 1 or 2 special educators, then resource room model will work. But again, not 100%, but maybe 30%, 40%. At least children were not getting any help, but now they are, with help of these special educators, they are getting accommodation from the board, they are getting compensations from the board, they are getting some help which they were not getting earlier. If I talk about cluster model, yes, definitely it will be useful in some ways, but not in different way, not in another way. If I talk about itinerant model, that itinerary model where the resource teacher is moving to 2-3 different schools in that week, okay, children are benefiting to some extent, but not to 100%. Now, what should it be? Should it be inclusion and integration together? But what is inclusion? Before that, we should know about it. What is integration, which we have been talking for long now? So let us see here. Integration versus inclusion. Needs of special students. Rights of all students. Inclusion says it is the right of all the students. RTE says that right of all the students to go to a neighborhood school and to get education up to the age of 14 at least. But integration talks about needs of special students. What is the need? How to work upon it? Integration says changing, remedying the subject. Here we are changing the subject. In what ways? We are modifying the subject. We are adapting the subject. We always use this word adaptation. What is adaptation? Adaptation is simplification of the subject. Adaptation is reducing the content of the subject. Adaptation is reducing the volume. Adaptation is simplifying the quizzes. Adaptation is changing the style of the quiz. Then remedying the subject. We are remediating. We are giving remediation for that particular subject. Child was not able to learn in a classroom of 30. Child was not able to learn according to the teaching methodology, what the teacher was following in a classroom setting. So we are giving him remediation for that particular subject. But inclusion talks about change the school. Change the school in what manner? Change the school in its infrastructure. Change the school by sensitizing the teachers more and more. Change the school by sensitizing the students more and more. Change the school by training your regular teachers to help children with special needs. Training your regular teachers to learn how to teach children with special needs. That is what is changing the school. Then benefits to the students with special needs. Integration definitely benefits to the students with special needs who have special needs. But inclusion benefits all students. How is inclusion benefiting all students? Inclusion is benefiting all students in such a way that the school is changing everything. The school is sensitizing everyone. The school is training every teacher. Each and every teacher is ready, equipped to work with children with special needs. Then integration says professionals, specialists, expertise and formal support. Here we are appointing a special educator, we are appointing counselors, we are appointing clinical psychologists, we are giving that formal support to those children who have needs, who are with special needs. But inclusion says informal support and expertise of mainstream teachers. How? By preparing these teachers, by sensitizing these teachers. Then what is the conclusion? The conclusion is inclusion is good teaching for all. It is good teaching for all. Why? Because you are taking in children with special needs. When are you taking these children with special needs? When you are prepared for it. When the school itself is prepared. When the school is prepared with infrastructure. When the school is prepared with all the teachers who are sensitive enough, who are ready and equipped to accommodate children with special needs.
children are also prepared. Children are also sensitive enough to help other children as buddy, to help other children as a, as that way. So I think inclusion is also very good, but at the same time integration is also very much required. यहाँ पर खास करके एक बड़ी अच्छी बात समझ में आती है कि बच्चे को स्कूल के पहुंचने से पहले स्कूल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है बच्चे को वेलकम करने के लिए। तो आज स्कूल प्रिपेयर कर रहा है, कल को सोसाइटी प्रिपेयर करेगी। जी, दो द वर्क इज गोइंग ऑन टू मेक इट एक्सेसिबल फिजिकली एंड मेंटली ऑल्सो। सो टुडे इफ द स्कूल इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ, दैट मीन्स स्टूडेंट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड, चिल्ड्रन आर बीइंग प्रिपेयर्ड। टुमारो who are going to take up these small children? They will grow up. Me and you will be much this thing, but these children they are growing up. They will grow up. They will learn right from the class nursery. They are learning. Society will be much more accepting. They will accept it more. और इस लिहाज से भी देखें कि चूंकि कल को हमारे ऐसे स्पेशल बच्चे इन्हीं बच्चों के साथ में काम करेंगे, हो सकता है कि किसी इन्हीं बच्चों में से किसी एक की फैमिली में, उनके पास पड़ोस में अगर ऐसा कोई स्पेशल नीड का बच्चा होता है, तो सोसाइटी फाइनली ऐसे लोगों की जी एक्सेप्टेंस ज्यादा आएगा, उनकी प्रॉब्लम्स को समझने में उसके क्या रिएक्शन होना चाहिए वो कहीं ज्यादा बेहतर होगा, कहीं ज्यादा एक बेटर सोसाइटी होगी हमारे ऐसे स्पेशल नीड्स के स्टूडेंट्स के लिए। जी, जैसे कि हम रिसोर्स क्लासरूम टीचिंग की बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा और लाइट डालना चाहूंगी, इस पे थोड़ा सा और प्रकाश डालना चाहूंगी। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स classes or rooms are the most important units established in regular schools setting to facilitate the learning process of children with special education needs. These classes are meant mainly for managing transition from resource class to regular classes, assessments and need identification of children, and providing care for social and emotional adjustments, provide individualized and special support such as remedial teaching, extra tutoring, counseling, mentoring, etc. Resource classroom functions as supplementary support system to CWT, to children with needs, disabilities and other needy children, motivating and preparing children with special needs to regular class education, building up awareness among parents and local people fighting for right to education for all, develop a school for all or welcoming all regardless of their difficulties or differences, and promoting individualized pedagogical support to children. So resource room can help in many ways. Now again, if we look at the government plans, what are the plans? Integrated education program for children with special needs. Like again, we will again have a look at it as a combined this thing. Focus on only pupils with special needs in mainstreams, itinerant teacher support teachers and pupils. 12 basic schools for an itinerant teachers. Pupils are withdrawn for remedial teaching. Volunteer teachers appointed for remedial teaching. Itinerant teachers is mobile with motorbike. Itinerant teacher and volunteer teachers are given allowances. Pupils live with families at home. The head of the mainstream schools assures responsibility for all children, disabled and non-disabled. A coordinate for the itinerant teachers, monitor activities of the itinerant teachers. Basically, coordinator, the one who is coordinating, will see and monitor the activities, will supervise them. So it's not that the government is not planning. Government is planning in different ways, but again I think we have to look at it now in a broader way, in a wider way. So if we talk about integration, it is a departure from traditional system of segregated schools towards inclusive schools. Has been a story initiative in India to meet the educational needs of individual children. So inclusion practices towards regular school. एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पर आपने कही कि डिपार्चर ऑफ द ट्रेडिशनल सिस्टम टू द इंटीग्रेशन सिस्टम, जो एक हमारी सोच रही है उसमें कंटिन्यू, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये हमारा जो सिस्टम आज हम जिसको बेहतर समझ रहे हैं, आने वाले टाइम में हो सकता है कि इससे भी ज्यादा बेहतर एक सिस्टम की हम कल्पना करें, लेकिन और ये हमारी एक लिविंग सोसाइटी का लक्षण है कि जो हमने एक बेहतर समझा, कंटिन्यू उनकी प्रॉब्लम्स के लिए ज्यादा बेहतर सेंसिटाइज हो रहे हैं। जी,
यस, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जी। क्योंकि अगर हम मूवमेंट ही नहीं लेंगे, अगर हम मूव ही नहीं करेंगे, अगर हम इनिशिएटिव ही नहीं लेंगे, तो हम तो पीछे रह जाएंगे जरूर, ना। जरूर। हम ना सोसाइटी के लिए कुछ कर पाएंगे, ना इन बच्चों के लिए कुछ कर। इससे जब कि कुछ हम कुछ स्टेप्स ले रहे हैं, लेट्स एक्सपेरिमेंट, वी आर एक्सपेरिमेंटिंग विद डेफिनेटली इट इज वेरी रीसेंट, नथिंग इज फाइनल, nothing is final, yes. So let us look at inclusion now. Somehow, why I'm saying let us look at inclusion also, also and only, like now I will say that yes, we need to look at inclusion also, because we have been talking about integration for long. But let us see what is inclusion. What does inclusion policy also say? Pupils are entitled to take part in all subjects and activities. Teaching and learning are planned with people in mind. The curriculum develops understanding and respect for differences. During lessons, all pupils participate. A variety of teaching styles and strategies is used. Pupils experience success in their learning. The curriculum seeks to develop understanding of the different cultures in society. Pupils take part in the assessment and accreditation system. Difficulties in learning are seen as opportunities for the development of practice. So if we look at these steps, if we read these steps, how much are we learning from these steps? Here we are talking about changing our curriculum. Here we are talking about changing our curriculum. We are not saying that no, you all over the night you change history, you change English. No, what are we saying here? That why can't we make this curriculum more friendly? How will we make this friendly? Let the core curriculum be there, but additions to it. How are we modifying that particular curriculum? How are we adding on more things to it? Like I'll give you a very small example. Here I'm not even talking about children with special needs. I'm talking about children who are different. Some children do not have that aptitude for academic, but they are very good in co-curricular activities. Their child is a very good artist, inborn artist. So much creative he is, but this child is not so good in academic. He is just performing average or below average. So what to do? Your school should have that curriculum of art, right from the junior school to middle school to the senior school, so that tomorrow if this child is not able to get good marks, good numbers, equal importance of the abilities of the students. Yes. कभी ये चीज हमारे आज तो ट्रेंड काफी चेंज हो चुका है, लेकिन इसके पहले हम जैसे आर्ट और गेम्स को तो बिल्कुल सब्जेक्ट के रूप में मानते ही नहीं थे। उसको हम इस चीज को रिस्पेक्ट करते ही नहीं थे कि बच्चे के अंदर में इस तरह की एक इंडिविजुअलाइज्ड एक ऐसी विलक्षण प्रतिभा है, एबिलिटी को भी हमें बढ़ाना चाहिए। जी। और यहाँ पर इंक्लूजन की मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी सक्सेस यही होगी जहां पर कि वो बच्चे की पर्टिकुलर किसी स्किल को ज्यादा बेहतर उसको मानते हुए उसमें उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए, और हर एक बच्चे की अपनी नीड्स के लिए सेंसिटाइज करते हुए एक जो ट्रेडिशनल सिस्टम की बात अभी तक होती थी कि जहां पर टीचर्स ने या एक फ्रेमवर्क बन गया कि इसके अकॉर्डिंग में बच्चे को पढ़ना है, बजाय इसके हम ये करें कि बच्चे की जो नीड है, बच्चे की जो लर्निंग पावर है, लर्निंग उसकी स्टाइल है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने सब्जेक्ट को चेंज करें, अपने टीचिंग स्टाइल को चेंज करें, तो बच्चा कहीं ज्यादा बेहतर होगा, हम उस बच्चे को अच्छे से अकोमोडेट कर पाए और एक ज्यादा बेहतर नागरिक वो बन पाएगा। तो दोस्तों आपने तो फ्रेंड्स आपने देखा कि हमारी एक्सपर्ट हमको बता रही हैं कि किस तरह से इंक्लूजन में जो एक नया स्टेप आया है, जहां पर कि अभी तक टीचर ओरिएंटेड या जो कहें एक सब्जेक्ट पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंस हुआ करता था, आज हमारे पूरे सेंटर में स्टूडेंट फोकस में है, और उसकी लर्निंग स्टाइल फोकस में है, उसकी एबिलिटीज फोकस में है, और यहीं पर इंक्लूजन की सबसे ज्यादा सफलता देखने को मिलती है। इंक्लूजन और किस तरह से हमारी लाइफ को, हमारे ऐसे बच्चों की लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, किस तरह से इसके और क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हो सकते हैं जिसका कि सोसाइटी में हमको देखने को फ्यूचर में देखने को मिलेगा, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे एक ब्रेक के बाद।
This is Aparna. She loves chess and Shah Rukh Khan. Her best friend is Swati. She also has visual impairment. This is Neeraj. He plays many instruments. He loves Mohammad Rafi and cricket. He also uses crutches for mobility. This is Raj Bala. With her husband and daughter. She loves cooking and watching TV. She also has cerebral palsy. Look beyond the disability. Look at the person. वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम चर्चा कर रहे हैं इंक्लूजन के बारे में। और आपने देखा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने देखा, हमारी एक्सपर्ट हमको बता रही थी कि इंक्लूजन किस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आज एक हमारे स्पेशल एज जो बच्चे हैं उनकी टीचिंग के बारे में। अब हम एक बार फिर अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं और इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि इंक्लूजन और क्या है, इसके साइलेंट फीचर्स जो कि हमारी लाइफ को कहीं न कहीं अफेक्ट कर रहे हैं। जी, जैसे कि अब ये स्लाइड पे अगर हम देखते हैं तो इंक्लूसिव एजुकेशन में इंक्लूसिव स्कूल्स एंड क्लासरूम्स टॉक अबाउट हेल्पिंग एवरीवन. Schools personnel will emphasize how the classroom or school will be changed to support the success of a child. The talk will be about how the extra adaptation and services will benefit everyone. Celebrating diversity, helping everyone, and having a support worker for the class are key. When looking at the IEP, strategies will be used to adapt and improve the classroom so that all students achieve success. So inclusion is about helping everyone. तो जैसे कि मैंने इस स्लाइड में पढ़ा है कि इंक्लूजन का मतलब ये है कि हम क्या सोच रहे हैं एज ए स्कूल, हम कितना चेंज कर सकते हैं अपने आप को, हमें कहाँ चेंज की जरूरत है, क्या हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज की जरूरत है, क्या हमें अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी में चेंज की जरूरत है, क्या करिकुलम को ही पूरा चेंज, करिकुलम की इम्प्लीमेंटेशन को चेंज होने की जरूरत है, इवेल्युएशन की इम्प्लीमेंटेशन को चेंज होने की जरूरत है, और करिकुलम में हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं या करिकुलम को हम किस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं. बट व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट दिस? वी आर टॉकिंग अबाउट दिस so that it can accommodate each and every child in that normal mainstream classroom or mainstream school setting. So inclusion is why we are saying inclusion is about helping everyone. जैसे कि अगर आप यहाँ इस पिक्चर को देखते हैं, there is a one child with some orthopedic impairment, and this child is also having borderline IQ. It is not only that locomotor impairment she has borderline IQ also, but how beautifully the teacher is trying to accommodate this child in a mainstream classroom setting. So it becomes very important that how this teacher is sensitive enough. We are preparing ourselves, we are preparing the students, we are preparing the classroom, we are having lift in place in addition to stairs, so that a child who is not able to walk, who is wheelchair bound, can come up on the first floor, second floor, then his mobility will not be hindered.
Now look at this. Ingredients for successful inclusion. What should be followed? When we are talking about inclusion, क्या हमें क्या follow करना चाहिए? इसे मैं बोलूंगी no barricades. Like we say that no barricades on the road. So in that way, I have broken these no barricades in different manner. N is for NIOS or non-formal education. What is non-formal education? Non-formal education is a functional education, functional literacy, functional life skill curriculum, along with many other variations. If a child is not able to do formal curriculum of the school, what else we can do to make it successful? What else we can do to accommodate that child? What else we can do to make the school completely inclusive school? Can we think about non-formal curriculum? एजुकेशन के टर्म को कहीं ज्यादा और वाइडर करके और डिफरेंट एंगल से देखने की जरूरत है जी. Then if you look at the O is others like pre-vocational or a vocational course. अगर बच्चा बड़ा हो रहा है और ये बच्चा आगे बोर्ड के लिए नहीं जा पा रहा है, हमें पता है कि 6, 7, 8, 9th और 10th ही बच्चा नहीं कर पाएगा, तो क्या किया जाए इस बच्चे के लिए? क्या हम प्री वोकेशनल कोर्स के लिए सोच सकते हैं 12 साल की उम्र से? क्या हम उसके बाद 14 से 17 साल की उम्र के लिए वोकेशनल कोर्स की सोच सकते हैं? और प्री वोकेशनल और वोकेशनल कोर्स की जब हम बात करते हैं तो प्री वोकेशनल और वोकेशनल कोर्स का मतलब ये नहीं है कि हम खाली उसको कुकिंग सिखाएंगे या कंप्यूटर सिखाएंगे. प्री वोकेशनल या वोकेशनल करिकुलम की जब हम बात कर रहे हैं तो हम ये बात कर रहे हैं कि हम उस एकेडमिक को किस तरीके से ब्रेक करें. क्या वो फंक्शनल रीडिंग सीख पाएगा? क्या वो फंक्शनल इंग्लिश सीख पाएगा? क्या वो फंक्शनल मैथ सीख पाएगा? और अलॉन्ग विद इट क्या हम उसको लाइफ स्किल करिकुलम के एरिया में, जैसे कि सेल्फ हेल्प करिकुलम है, सेल्फ हेल्प वेज हैं, या अगर हम उसकी बात कर रहे हैं तो देन देयर आर अदर वेज ऑल्सो लाइक सेल्फ हेल्प है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ एस्टीम है, इंडिपेंडेंट स्किल्स हैं, कम्युनिटी स्किल्स हैं, कम्यूट करना एक जगह से दूसरी जगह, वर्क स्किल्स हैं, प्री वर्क स्किल्स हैं. क्या हम उसमें भी उसको कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम ये देंगे तो हम उसके लेवल पे जा पाएंगे. हम उसको एटलीस्ट जिंदगी में अगर हम उसको BA MA की डिग्री ना दिलवा पाए तो कहीं ना कहीं हम उसको किसी ना किसी तरीके से इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो आगे जाके वोकेशनल करिकुलम करके शेल्टर्ड वर्कशॉप के अंडर, किसी भी शेल्टर्ड वर्कशॉप में जाके या किसी भी छोटे ऑफिस में जहां पे लोग सेंसिटिव हैं, जहां उसको थोड़ी मदद मिल सकती है, अपनी रोजी रोटी कमा सके. बॉडी टीचिंग, क्या हम बात कर रहे हैं बॉडी टीचिंग की? क्यों बात कर रहे हैं? बॉडी टीचिंग क्या होती है? अ चाइल्ड हु इज अ ब्राइट चाइल्ड इन अ मेन स्ट्रीम क्लास बट हु इज अ सेंसिटिव चाइल्ड ऑल्सो, कैन दिस चाइल्ड हेल्प दिस चाइल्ड हु हैव स्पेशल नीड्स, हु नीड्स हिम और हर? एडेप्टेशन एंड अकोमोडेशन, जिसकी कि हम बहुत देर से बात करे जा रहे हैं. हम ये कह रहे हैं कि किस तरीके से करिकुलम को अडेप्ट करना चाहिए, किस तरीके से हमें अकोमोडेट करना चाहिए करिकुलम उस बच्चे को अकोमोडेट करने के लिए, और क्या अकोमोडेशन दे सकते हैं, कहाँ हम कॉम्पेंसेशन दे सकते हैं, कहाँ हम उसके एग्जाम्स को उसके हिसाब से मल्टीपल चॉइस में उससे पूछ सकते हैं. इन सब चीजों में क्या हम एडेप्टेशन कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो हम सक्सेसफुल इंक्लूजन की तरफ मूव कर रहे हैं. रिसोर्स रूम, जिसके लिए हमने काफी डिटेल में बात किया. हमने रिसोर्स रूम की क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, क्या कर सकते हैं हम रिसोर्स रूम में, क्या रिसोर्स रूम का होना इन स्कूल सेटिंग बहुत जरूरी है या नहीं जरूरी है, अगर है तो हम उसमें क्या क्या उस बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हैं. रेमिडिएशन की बात कर रहे हैं. I for infrastructure, a good combination of inclusion and integration. क्या हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सही कर रहे हैं ताकि हम बच्चों को एडजस्ट कर पाए. C is for capacity building of teachers और curriculum modification. A is for attitude. क्या हम सबका एटीट्यूड पॉजिटिव है उन बच्चों को स्कूल में एडजस्ट करने के लिए? क्या टीचर्स का एटीट्यूड पॉजिटिव है और बच्चों का एटीट्यूड पॉजिटिव है? क्या प्रिंसिपल भी सोचती है कि इन बच्चों को अकोमोडेट करना चाहिए या इन बच्चों को एडजस्ट करना चाहिए? अगर हम ये सब में सोच रहे हैं तो हम उस बच्चे को इंक्लूड कर रहे हैं, हम इंक्लूजन की बात कर रहे हैं. देन वी आर टॉकिंग अबाउट डेडिकेशन. आर वी डेडिकेटेड? इज आवर स्टाफ डेडिकेटेड? आर वी वर्किंग ऑन देयर डेडिकेशन? If they are not, are we talking to them about what sensitivity is and how to sensitize ourselves or how to make ourselves sensitive towards others' need? So इस तरीके से हम पॉजिटिव अगर एटीट्यूड टीचर्स में लाने की जरूरत, टीचर्स में लाने के लिए बात करते हैं, टीचर्स में लाने की कोशिश करते हैं, तो हम टीचर्स को ऑटोमेटिकली डेडिकेटेड होना भी सिखा रहे हैं. E is evaluation modification. How are we talking about our exam policy?
क्या हम अपने क्वेश्चन पेपर को थोड़ा सा भी मॉडिफाई करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी है हम में? क्या हम सोच रहे हैं? अगर हम सोच रहे हैं तो हम कंप्लीट इंक्लूजन की या हम इंक्लूजन को पॉसिबल करने की सोच रहे हैं। इधर 30 में से 25 बच्चे मेन स्ट्रीम के एग्जाम ले रहे हैं। 5 बच्चों में से 2 बच्चों की नीड्स ऑलमोस्ट सेम है, 3 बच्चों की बिल्कुल डिफरेंट है। क्या हम अपने एग्जाम अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? इवैल्यूएशन को उसके लिए मॉडिफाई कर रहे हैं? यस, डेफिनेटली अगर हम कर रहे हैं तो हम इन बच्चों को इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, हम इधर जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम पहले इंक्लूजन वर्सेस इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? इंक्लूजन को समझने के लिए, इंटीग्रेशन को समझने के लिए। अब हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। हम क्यों करेंगे कॉम्बिनेशन की बात? क्या सच में कॉम्बिनेशन की जरूरत है? तो इसलिए अगर हम इस स्लाइड को पढ़ते हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड इंक्लूजन, कोलैबोरेटिव टीचिंग, इफेक्टिव रेमेडिएशन, टाइम इन एन इंक्लूसिव सेटअप, handling children with different needs in mainstream along with others, different type of curriculum to accommodate all in a regular classroom setup, capacity building teachers, sensitization of students and teachers. So these are the challenges also. But at the same time, if we are working on it, if we are achieving it, then definitely we are moving towards including these children with special needs in our school in a successful way. So, अगर हम इन चैलेंजेस लेकिन फिर भी अपने स्कूल में चैलेंजेस की तरह अगर फेस करना पड़ रहा है तो हमें इन पर काम करना चाहिए। हम इन पर काम करेंगे तो हम इन बच्चों को इजीली इंक्लूड कर पाएंगे। खास करके यहाँ पर दोनों के एक, जैसा आपने कहा कि इनको एक दूसरे से अगेंस्ट में देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन दोनों को साथ में लेकर के चलने की जरूरत है। हमारा जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है वो बच्चे का हित करना है, और इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो भी चीजें, जो भी स्टेप्स, जो भी मेथड्स हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं उसको अपनाने में बिल्कुल भी कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए। जी, तो अगर मैं ये पढ़ना चाहूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने कहीं से लिया है ये, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, लाइफ टू गो ऑन, change is inevitable. Change is never easy, especially when it involves a large number of individuals and an established system to change. Yet change is necessary. When innovative practices demonstrate greater effectiveness than past services. Here, what I mean to say, what it is saying that change होना मुश्किल है, क्योंकि जो चीजें ऑलरेडी सेट हो चुकी हैं उनमें चेंज लाना मुश्किल है, बट एट द सेम टाइम इट इज नॉट इम्पॉसिबल। अगर हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, जैसे कि मैंने आपसे पहले नो बैरिकेड्स के टाइम पे भी बात करा, कि अगर हम अपने उसमें चेंजेस लाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस लाएंगे, थिंकिंग में चेंजेस लाएंगे, एटीट्यूड में चेंज लाएंगे, बच्चों की सेंसिटिविटी में चेंज लाएंगे, करिकुलम को मॉडिफाई करेंगे, इवैल्यूएशन सिस्टम को मॉडिफाई करेंगे, तो मुश्किल है डेफिनेटली, बट इम्पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम इस चेंज को धीरे धीरे लाएंगे, हमने इनिशिएटिव लिया है, अब हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। इस इनिशिएटिव में हम आगे और काम करेंगे। हम काम करेंगे तो हम धीरे धीरे इस बच्चों को इंक्लूड कर पाएंगे, बट इसके लिए हमें बहुत काम करना है। हमें प्योरली इंक्लूजन की नहीं सोचनी है या प्योरली इंटीग्रेशन की नहीं सोचनी है, हमें कहीं ना कहीं दोनों चीजों को कंबाइन करने की सोचनी है, जहां पे हम इंक्लूजन पॉलिसी को भी सक्सेसफुल कर पाए, एट द सेम टाइम इंटीग्रेशन को अप्लाई करके बच्चों को भी प्रिपेयर कर पाए उस पर्टिकुलर सेटिंग के लिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूंगी कि अगर हमारे पास ये मॉडल है स्कूल में तो हम इंक्लूजन को सक्सेसफुल बना पाएंगे, इंटीग्रेशन को सक्सेसफुल बना पाएंगे। ये आपने एक स्कूल किस तरह से डिजाइन होना चाहिए उसके बारे में कुछ बताया जी। इसमें इस वाले मॉडल में मैंने ये बताया है कि किस तरीके से एक रेगुलर स्कूल चल रहा है, जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं, जिसमें CWSN के बच्चे भी हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के बच्चे भी हैं, और इस स्कूल में एक रिसोर्स रूम भी है। NIOS की भी सोच रहे हैं हम, वोकेशनल एंड प्री वोकेशनल कोर्सेज एंड एम्प्लॉयमेंट की भी सोच रहे हैं, और यहाँ पे हम अपने करिकुलम को इस तरीके से मॉडिफाई कर रहे हैं कि हम मेन स्ट्रीम बच्चों को भी बेनिफिट कर रहे हैं, हम उन बच्चों को भी बेनिफिट कर रहे हैं जिनको रिसोर्स रूम से रेमिडिएशन से काम चल रहा है, हम उन बच्चों को भी बेनिफिट कर रहे हैं जो कि मेन स्ट्रीम बोर्ड नहीं कर पा रहे पर वो 9th 10th NIOS नेशनल ओपन स्कूलिंग के थ्रू बोर्ड कर पा रहे हैं, हम उन बच्चों को भी बेनिफिट कर रहे हैं जो कि प्री वोकेशनल ट्रेनिंग लेकर आगे वोकेशनल प्रोग्राम के लिए जाएंगे, और उसके बाद कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ स्किल्स में जरूर इंडिपेंडेंट हो पाएंगे। सो इट इज रियली इम्पोर्टेंट दैट वी वर्क ऑन all these models inside the
normal mainstream school setting to make it successful. So this is what I want to say. बहुत बढ़िया। ये एक आपने जो एक ऐसे स्कूल की कल्पना की है जहां पर कि हम चाहे वो हमारे स्पेशल नीड के बच्चे हैं या कॉमन बच्चे हैं या खास करके अगर पढ़ाई में कोई बच्चा है जो लैग कर रहा है तो उसको भी सबको साथ में लेकर के चलने की जरूरत है। यही इंक्लूजन की असली भावना है। और जैसा कि आपने अंतिम में ये कहा कि बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना वही हमारा अंतिम उद्देश्य है। लाइफ स्किल्स में इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी होता है जी। तो और नहीं कि सिर्फ लाइफ स्किल्स की ही बात नहीं, अगर हम इस बात को भी ध्यान दें कि जैसे हमने वोकेशनल कोर्सेज को भी इसमें इंक्लूड करने की बात कही है तो वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस की बात हो, सेल्फ एस्टीम ग्रो करने की बात हो, और इन सारी चीजों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो इंक्लूजन की ये सिस्टम है वो निश्चित रूप से इस भूमिका में इस रास्ते पर आगे चलता है। और इससे हमें उम्मीद है कि जो एक हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हम अचीव कर सकेंगे। अंजू जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आपने इस प्रोग्राम पर आपने बहुत अच्छी चर्चा की और उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को बहुत लाभ मिला होगा इससे। तो दोस्तों, अब इसी प्रोग्राम को यहाँ पर हम विराम देते हुए आप सभी से विदा लेते हैं। फिर एक नए प्रोग्राम के साथ में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।